Hello children, good morning. So children, now in our today's class we will start with the session number 1, that is database concepts. So for this, here our class begin. So children, in our previous class we have started the topic database development, and in our previous class we have discussed few certain basic terms related to database. First is data and information. What is data? Data is any raw fact and figure, or we can say data may be any number, any word, any image. That one is data. What is information? Information, when this raw data we processed it will give us meaningful information. ठीक है, तो जो meaningful हो गया तब वो information हो गया. For example, I am writing date of birth here without name. This one is data. ठीक है, raw fact है तो उसी क्लास का, but अभी ये मेरे लिए useless है. I am writing name here in front of these date of birth. Now it will become meaningful piece. ठीक है, so meaningful piece of information, इसको हम क्या बोलते हैं? This one is information. ठीक है, and next is that we can use this database everywhere. Children, in our school also we are using database for maintaining student attendance, marks, medical report of that student, and in that companies they are maintaining the record of their employees. In factories workers का record maintain करना है. In hospital patient की medical history वो maintain करते हैं. Reservation office, you have seen that they are also maintaining their database of specific trains. अगर आप जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, that in online shopping they are also maintaining database. If we are going there in the bank, that bank is also maintaining the database of every account. And if we are going there in that mall, they are giving you bill. Okay, it means they are also maintaining database of their whatever the stock they are having. So it means database is that we are using everywhere in our life. Okay, so database, in this class we will discuss MS Access. MS Access is a GUI based. GUI means graphical user interface. MS Access we are using for creating database. And RDBMS, what is DBMS? DBMS, database management system, means with those system, by those softwares by which we are maintaining this database, that one is database, that one is DBMS. ठीक है चिल्ड्रेन, डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर. ठीक है, और जब डेटा प्रोसेस हो गया इट विल क्रिएट इंफॉर्मेशन. व्हेन वी आर स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन, स्टोर कहाँ होती है इंफॉर्मेशन? वी मेंटेन दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. और जब हमें ऐसे बहुत सारे टेबल्स का कॉम्बिनेशन होता है इट विल मेक वन डेटाबेस. ठीक है, सो स्मॉलेस्ट यूनिट इज डेटा. डेटा प्रोसेस हुआ, इंफॉर्मेशन बन गया. जब इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर कर लिया टेबल में तो वो एक टेबल बन गया. जब इस तरह की हमने बहुत सारी टेबल मेंटेन करके उनको लिंक कर दिया, डेट विल, और हमने स्टोर कर लिया, डेट वन विल डेटाबेस. एंड इन दिस कंप्लीट प्रोसेस व्हाट सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग, दैट वन मेथड इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट इज RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. Children, this RDBMS is based on relational model and it is introduced by Sir E.F. Code. And this RDBMS, what does it mean, ma'am? RDBMS is that you are maintaining your database in the form of tables. ठीक है, one table is this one table is this one, and I am linking these table with one another, so this one is make RDBMS. ठीक है, अगर मैंने उन tables में create किया और मैंने उन tables को save भी कर लिया तो वो जो database हुआ, that database is known as RDBMS, Relational Database Management System. And children, what we covered in our previous class, database server. What is this database server? Server is who is fulfilling the request of the clients. ठीक है, अगर जो सर्वर है, if server is having database and all the request of the clients related to database, if server is fulfilling, so that server is known as database server. Children, you have seen that in companies also, ठीक है, और even you are doing online shopping ना, they are having what database server. For example, I will give you one example, that in bank also you have seen that bank server is there, and different cities they are connected to that server. They said na that server nahi aa raha, means their connectivity is not there with that server, so they are unable to give you the detail. ठीक है, so what is database server? Server means where who is fulfilling the request, and if request is related to database or that server is maintaining that database is known as database server. Or we can say that
that actually hold the database. That database, ठीक है, that server is known as database server. And children, now in today's class we will start with the topic database concept. Children, you have seen that we are maintaining database previously also. That time we are doing this work manually. But nowadays we are using this DBMS, database management system, and with this database management system it provides us the facility that we can easily create, we can easily modify, changes भी कर सकते हैं database में, delete भी कर सकते हैं, add भी कर सकते हैं data in the database. ठीक है, so DBMS is a software that allows us that we can perform these operations easily and efficiently. Children, what is database? Yesterday also we have discussed in previous class. What is database? Database is a collection of interrelated records, ठीक है, interlinked record, and or that can store the data in a computer system. Okay. Next is children, जो आपका complete database होता है, database is a combination of tables. Tables link होती है. अगर हम table की बात करें, this one is the table. टेबल इज अ कॉम्बिनेशन, अगर हम देखें टेबल क्या होता है, टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस. क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज रिकॉर्ड, सेकंड कंपोनेंट इज फील्ड. व्हाट इज दिस रिकॉर्ड एंड फील्ड? दिस वन इज योर टेबल इन द डेटाबेस. टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. यू ऑल आर अवेयर, पता है रो कौन सी है? दिस वन इज रो 1, रो 2, रो 3, ये सारी रोज हैं. And which one is the column? Column, this one is the column. Column 1, column 2, column 3, these are the columns. ठीक है, so in every database row is also known as record. Remember in exam question will say like this, that define the following terms: record, tuple, row. ठीक है, like this. So exam question directly will come, define the following like this. ठीक है, so and in database also, when we are moving in this chapter in deep now, there you have heard this term so many time, record. तो what is record? in database table होता है, वो क्या होता है? combination of row and column. तो जो एक रो होता है, that row is known as record. ठीक है, टेबल रिकॉर्ड, रो को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड भी बोलते हैं. और वी कैन से रिकॉर्ड को हम टपल भी बोलते हैं. रिमेंबर, ठीक है, इस चीज को लर्न कर लो. इन अ डेटाबेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल्स. टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. यहाँ पे जो रो होती है, ठीक है, रो को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रिकॉर्ड, और हम इसको टपल भी बोलते हैं रो को. ठीक है, और रो होती है डेट, देखो सपोज आई एम क्रिएटिंग दिस टेबल एंड हियर इज नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, एंड हियर इज मार्क्स. ठीक है, आई एम फिलिंग द एंट्रीज हियर. सो दिस वन, अगर हम एक रो की बात करें, इफ वी आर डिस्कसिंग वन रिकॉर्ड इज होल्डिंग डिफरेंट वैल्यूज. नेम है, उसमें क्लास है, उसमें रोल नंबर है, सेक्शन है. सो रिकॉर्ड विल कंटेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सेम पर्सन. ठीक है, ऑफ वन सिंगल सब्जेक्ट. एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर मैंने सारी वैल्यूज होल्ड कर ली, दिस वन इज नोन एज वन रिकॉर्ड. इफ इन अ टेबल 200 एंट्रीज आर देयर, तो मैंने कितने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं? वी आर मेंटेनिंग 200 रिकॉर्ड्स. ठीक है, सो रो इज ऑल्सो नोन एज रिकॉर्ड, और वी कैन से टपल. रो कंटेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेम पीपल, ऑफ वन सिंगल पर्सन. ठीक है, सो दिस वन इज नोन एज रिकॉर्ड. ओके, रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फील्ड. Children, in database, in table, column is also known as field. अभी बताया था मैंने that these are the column. ठीक है, column is also known as field. Field 1, field 2, 3, 4 and 5. Here I am writing name, here I am writing class, section, roll number and marks. If we discuss this column, तो ये देखो सबके names ही hold किए हुए हैं इस column ने. So field, it will contain the same value. यहाँ पे भी नेम होगा, यहाँ भी नेम होगा. इफ 200 रिकॉर्ड्स आर देयर, तो इट मीन्स 200 फील्ड, इन दिस फील्ड 200 नेम्स. ठीक है, सो फील्ड विल होल्ड द सेम इंफॉर्मेशन बट ऑफ डिफरेंट पर्सन. रिकॉर्ड तो डिफरेंट वैल्यूज होल्ड कर रहा था, लेकिन वो सब एक ही पर्सन की थी. यू हैव सीन ना दैट, यू हैव हर्ड सो मेनी टाइम दैट पुलिस सेड यू विल फाइंड द रिकॉर्ड ऑफ दिस क्रिमिनल. ठीक है, टीचर इज मेंटेनिंग योर रिकॉर्ड इन द रजिस्टर. सो रिकॉर्ड तो होल्ड क्या करता है?
रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड होल्ड करता है डिफरेंट वैल्यूज, किसकी? ऑफ द वन सिंगल एम्प्लॉय। और अगर हम फील्ड की बात करते हैं इन द टेबल, फील्ड इज ऑल्सो नोन एज कॉलम, ठीक है। और जो कॉलम होता है वो क्या करता है? इट विल होल्ड सेम टाइप ऑफ वैल्यू, सबके नेम ही इसने होल्ड किए हैं, सेम टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट पीपल, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर हम डिफरेंट लोगों की चीज को होल्ड कर रहे हैं तो दैट वन इज नोन एज फील्ड। फील्ड, दिस इज अ कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ क्लास रजिस्टर, अगर मैं रोल नंबर की बात करूं, रोल नंबर कॉलम इट विल होल्ड द रोल नंबर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, तो रोल नंबर क्या है? एक फील्ड है। नेम फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेटा आइटम एंड डेटा वैल्यू. What is data item and data value? Children, look, one example is there. In your previous classes you have done ना this database MS Access किया है, ठीक है। So in MS Access what is there? Suppose this one is the table. ये मेरी एक table है. Table is a combination of row and column. You will check that here so many rows are there, so many columns are there, and here you will check product ID, product name, price, and here blank. ठीक है। सो हेयर ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर इन आईडी, सर्टेन वैल्यूज आर देयर। प्रोडक्ट नेम में कुछ है, प्रोडक्ट आईडी सम वैल्यूज आर देयर। प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है एलसीडी मॉनिटर एंड मल्टीमीडिया स्टैंडर्ड लेजर प्रिंटर लाइक दिस, एंड देयर प्राइस इज ऑल्सो हेयर, ठीक है। सो अगर मैंने ये सब चीज़ें मेंटेन की है तो मैंने क्या किया है? आई एम क्रिएटिंग डेटाबेस। अब मैं इस डेटाबेस की बात करूं, सो यू विल चेक विच वन इज रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज रो, ठीक है। वन सिंगल रो इन द डेटाबेस इज नोन एज रिकॉर्ड। इसने डिफरेंट वैल्यूज होल्ड की हुई हैं, कहीं नेम है, कहीं पे कुछ नंबर है, कहीं पे कुछ वर्ड टेक्स्ट है। सो इसने डिफरेंट वैल्यूज होल्ड की हैं, लेकिन इसने सारी वैल्यूज किसकी होल्ड की हैं? एक सिंगल पर्सन की। हियर इट इज रिटन स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर P04 एंड कॉस्ट इज 5000। तो इसने क्या है? एक सिर्फ कीबोर्ड की ही सारी डिटेल इंफॉर्मेशन स्टोर की है। सो दिस वन इज नोन एज वन रिकॉर्ड। अगर मैं बात करती हूँ, सपोज दिस वन इज माई टेबल, हेयर इन दिस कॉलम यू विल चेक दैट इट विल होल्ड प्रोडक्ट आईडी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है। सबने सारी प्रोडक्ट आईडी हैं, मीन्स इट होल्ड द सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ, इन दिस कॉलम यू विल चेक इन दिस फील्ड इट विल होल्ड ऑल नंबर्स, ठीक है, सेम टाइप की वैल्यू होल्ड की है। बट तो दिस वन इज नोन एज प्रोडक्ट, this one is known as field, ठीक है, and it hold the same value of different people, different product, ठीक है। so this one is known as field. Children, next two term is data item and data value, ठीक है। data और value, और what is there? data item and data value. What is these two term, ma'am? data item, what it means? data item means what is the heading of the this field name, ठीक है, product ID, product name, price, and here is blank, here is ID. So these field name is known as your data item, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे ये प्रोडक्ट ने ID is not written here, तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें प्रोडक्ट ID लिखना है? If product name is not here, then how can I recognize that we have to mention here product name? So what is data item? Data item, all are the these headings of these table, ठीक है, these heading of this field name, ठीक है, ये जितनी भी headings होती हैं these are known as data item. Next is data or value. What is data or value? Children, in the table you have seen that we are filling the entries. कहीं पे मैंने नंबर लिखा हुआ है, कहीं पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। सो डेटा और वैल्यू, ठीक है। डेटा और वैल्यू क्या होता है? वट एवर वी आर राइटिंग इन दीज कॉलम, वट एवर वी आर वैल्यूज वी आर मेंशनिंग हेयर, दिस वन इज नोन एज डेटा और वैल्यू, ओके। सो व्हाट इज डेटा एंड वैल्यू? हेयर यू विल चेक data item. What is data item? Data item, it is the entity that make up a database, which means that every record contain information about some or other data item, ठीक है। data item क्या होता है? that every field, whatever the information that field will hold, ठीक है। so जो heading होती है उसकी, किसी column की जो heading होती है, name, I am creating this table, here I am writing name, class, roll number. So इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? ये जो हेडिंग है किसी फील्ड कॉलम की, दिस वन इज नोन एज डेटा आइटम, ओके। डेटा वैल्यू, वट एवर वैल्यू आई एम मेंशनिंग हेयर, ठीक है, डेटा और वैल्यू, नेम आई एम राइटिंग X, Y, क्लास 10th 9th,
रोल नंबर 12 14. सो ये जो चीज है ये क्या है, डेटा और वैल्यू. दीज आर डेटा वैल्यू. डेटा आइटम, whatever the name I am giving there on the field, ठीक है, फील्ड का जो नेम होता है that one is known as data item in the database. Data value, whatever the value you are inserted there, उसको हम बोलते हैं data value. Next is table. What is table? Table is a collection of similar type of record. We have already discussed that database is made up of tables only. So what is table? Table we can say that it is a बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डेटाबेस. ठीक है, टेबल नहीं होगी तो आपका डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग एवरीथिंग इन द टेबल. So table are the building blocks of the database. A table is a collection of similar record in the form of a grid. Grid children we can say combination of row and column. ठीक है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम grid बोल देते हैं. So table is a building block of a database and it is divided into row and column. So till now what we have discussed? We have discussed about रिकॉर्ड. रिकॉर्ड क्या होता है? इफ वी डिस्कस टेबल के अंदर जितने भी रोज होते हैं, रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं. और हम इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम टपल भी बोल देते हैं मैम. अच्छा अच्छा, और कॉलम को क्या बोलते हैं? कॉलम को मैम हम फील्ड बोलते हैं. ओके. एंड व्हाट इज डेटा आइटम? मैम जो ये फील्ड की हेडिंग्स होती है ना, इन सबको तो ना हम फील्ड वी कैन से डेटा आइटम ऑल्सो. ठीक है, ये जो हेडिंग आपने लिख दी थी ना यहाँ पे, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड सेक्शन, वी कैन से दीज वन आर द डेटा आइटम. दिस वन इज माय टेबल, आई एम राइटिंग नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन. सो इन जो ये हेडिंग्स हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, डेटा आइटम. नेक्स्ट इज डेटा और वैल्यू. मैम इन द टेबल वॉट एवर द रिकॉर्ड वी आर मेंटेनिंग हेयर इन दैट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं डेटा और वैल्यू. अगर मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, नेम लिख दिया मैंने XYZ, सो ये तो हो गया हमारा डेटा. मैम इन रोल नंबर इफ आई एम राइटिंग 12 14, तो ये हो गई हमारी वैल्यू. सो डेटा और वैल्यू क्या होता है, जो हम इन टेबल्स के कॉलम के अंदर जो भी हम वैल्यू फील्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा और वैल्यू. वेरी गुड चिल्ड्रन. व्हाट इज टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स. मैम what you are saying? Table is a combination of row and column, or we can say table is the building block of any database. टेबल नहीं होगा तो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा मैम? वेरी गुड. टेबल वी कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड. ठीक है, ये देखो मैंने अब ऐसे एक रिकॉर्ड मेंटेन किया, वन मोर रिकॉर्ड आई एम इंसर्टिंग, सो टेबल इज अ ग्रिड ऑफ दीज रिकॉर्ड्स. ठीक है, जब हम बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर देते हैं, इट विल मेक वन टेबल. Okay children, so next is your some additional database object, that this database it provide you the facility that you can create query, form, report. Children, all three definition are important one. So first is your query. In exam question will come directly from these 6 terms that define record, define query, form, report. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम में. ठीक है, सो व्हाट इज क्वेरी? Query in general term we can say, children, have you heard about this term that teacher is saying you in the class, are you having any query, are you having any doubt? ठीक है, तो टीचर क्या बोलती है, कोई क्वेरी है क्या, कोई क्वेश्चन है क्या आपके माइंड में? सो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू आर आस्किंग दिस टू योर टीचर. सेम थिंग, अगर मुझे डेटाबेस में से कुछ पूछना हो तो इफ आई वांट टू दैट, सपोज आई एम क्रिएटिंग दिस वन इज माय टेबल. ठीक है, एंड इन दिस टेबल हियर इज द मार्क्स एंड हियर इज द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट. Principal sir said कि ma'am we are taking this 10th class to the picnic, but the condition is that children who is having marks greater than 37 only they are allowed to go. So sir said कि ma'am please bring that list, I am going there and I am from the record I am searching that who is having marks greater than 37. Suppose 5 children are there but I am doing it manually, so might be possible human error. ठीक है, in place of 4 children name I have given, but the 5th child who is saying कि ma'am I am also getting marks greater than 37, why you are not giving my name? ठीक है, so if human is doing this searching it will make it take time and efficiency भी proper नहीं होगी.
So in place of this, that MS Access provide you the facility that if you want to search something from the database, that you are able to place a query there, and this database will do the searching for you, and it will give you extract the information from the database, and it will give you that information in the form of table. So children, don't worry, from this topic query we will discuss in our next class. Until then, do revision, and thank you class for listening me and giving me your precious time. Thank you.